Good evening all of you. Welcome back again to the second day of our short-term course on secrets of human psychology and mental health. This is Dr. Tarika Sharma, Assistant Professor and Counselor from Department of Psychology, St. Wilfrid's College for Girls. On first day, we talked about mental health. We talked about what are the characteristics of a good mental health. We talked about what are the stigmas that causes mental health problems to a peak and what are the harmful effects of stigma. We also talked about various myths and facts about mental health. So, after considering all these things, we move towards the measures for promoting mental health. But due to some technical error, we did not complete our session yesterday. I sincerely apologize to all of the viewers who waited patiently for the video to resume. So, in order to compensate the loss you had yesterday, we are resuming our session first, again with the topic, measures for promoting mental health. So, let's begin and let's talk again from the starting that what are the measures that can be taken for promoting mental health. So as I showed you in the PPT tomorrow that I have made certain steps that starts from the individual level, then to the group level and then to the community level that can pave path to improve mental health. As you can see, we first talked about that identify the sign. Look for the warning sign that there is something wrong happening to me or to the person next to me. So we talked about certain signs like inability to sleep. Yes, if you are not getting enough amount of sleep, if you are not getting if you are not sleeping for enough hours in the way you used to be, you are not waking up on time, you are not sleeping on time. So try to pay attention. Try to pay attention that yes, there is some problem. And if it is possible for you, then please monitor or track your sleeping progress or your sleeping condition for at least a couple of days. Next, feeling down, inactive, helpless most of the time. As I said that the person who is suffering from some kind of distress does not enjoy things in his life. He feels very passive. He does not feel like to initiate things. As I said, I do not feel like to dance. I do not feel like to study. I do not feel like to go out. So if these are the things that you used to do before, you used to enjoy and now you are not doing it, then pay attention. Yes, something is wrong. Poor concentration during work at home, school, workplace, etc. So being a student, if you are not doing your assignment on time, if you are not listening to the lectures teachers giving in class, if you are not participating enough in the curriculars and extracurricular activities, then pay attention that there is something wrong going on. If you are not doing the deadlines given to you by your boss at your workplace, you are not maintaining a healthy and sound relationship with your employees, you are not following the protocols that have been given to you, then there is something wrong with you. And now do not feel disheartened or disappointed that there must be something severe going on. Remember, warning signs are indication that things can go worse, so stop them before the conditions get worse. Next, low self-esteem. Yes, you start losing your faith on your potentials. You do not trust your positive aspects anymore. You feel like I won't do this thing because I do not think I possess enough skills to do that. So what we need to do? We need to pay attention. We need to look that if I am failing at this particular aspect, I should work upon it. Negative and irrational thoughts. जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कभी किसी के रिमार्क की वजह से या कभी कभी एक छोटे से फेलियर की वजह से हमें लगता है कि हमारी लाइफ का वो एस्पेक्ट परमानेंट हो गया. किसी पर्टिकुलर इनएडिक्वेसी की वजह से, किसी असाइनमेंट से निकाल देना, किसी स्कूल प्रोजेक्ट से निकाल देना या लाइफ में कोई अनफेवरेबल इवेंट हो जाना, उसके बेस पे हम अपने आप को कंक्लूड कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में तो हमेशा ही ऐसा हुआ है, आगे भी होगा
तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। तो ये जो चीजें हम एट्रीब्यूट करते हैं, हम चीजों को हमेशा नेगेटिवली कंक्लूड करते हैं, ये भी एक साइन है कि हम हमारे फेलियर्स को सरेंडर करते जा रहे हैं। इट मीन्स अब हमारे अंदर वो पोटेंशियल्स हैं ही नहीं, या अगर थे तो हमने उनको इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया है कि अब So as I said that we should look at the warning signs. That means we should focus that do we have or do we possess any kind of irrational thoughts? So if we have some kind of irrational thoughts, or if we have started overgeneralizing or going to conclusion too soon, then we need to pay attention to these things. Next thing, as I said, that we need to see that are we expressing the emotions appropriately at a right time, in a right manner. If we are not doing so, we need to pay attention on these signs also. Fear that one can't control. Are we having some kind of fear of something that the source of which is not immediately present in the recent time? As I said earlier also, the person who is suffering from mental illness, he has some kind of fear. Fear of what? He is unaware of it. Because in the case of normal fear, a person is aware that whatever he is fearing of, the source is immediately present in front of him. But in this case, when the person is suffering from mental illness, he always remains preoccupied that I have some kind of fear, I might get into trouble, I might develop some kind of physical illness, I might get some kind of failure in my life. The cause, the triggers, the predisposing factors, or anything that can contribute to that fear is really not present. Only he is considering those things in his mind, and he is not doing it willingly. It happens to him. As I said, do not think that the person is cooking up these things, because this is again a myth. So we have to pay attention that if we are having these kind of fear or these kind of worries, the source of which is not apparent in the present time, please pay attention. Reduce performance. We are not performing our day-to-day task or anything that we used to do at the level that we were capable of. Suppose I used to study for 7 to 8 hours, but now I won't be able to study for 1 hour, even for 1 hour. So yes, there is something wrong. See, it might be possible that we have some kind of problem or some kind of hurdles that is coming from the environment. But if we are restricting ourselves from inside, from not doing the things, then we need to pay attention. कोई ऐसी चीज जो आप पहले से करते थे, जिस लेवल पे किया करते थे, जिस ईज से किया करते थे, जिस पेस से किया करते थे, अगर आप उस तरीके से उन चीजों को आज नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपको बहुत जरूरत है अपनी उन सब चीजों को पहले तो ध्यान दें, अटेंशन पे करें, मॉनिटर करें, ट्रैक करें और फिर उस पर काम करें. लैक ऑफ मोटिवेशन. अब आपको अपने मोटिवेशन इज समथिंग दैट पुश अस टू परफॉर्म समथिंग. अब हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन या तो हम खुद हो सकते हैं या फिर वो कोई एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है. सपोज करो मम्मी हमें मोटिवेट करती है, या हमारे फादर से हम मोटिवेट होते हैं, या कोई फ्रेंड हमारा हमें मोटिवेट करता है, या फिर कोई भी एक अच्छी बुक, कोई भी एक अच्छा आर्टिकल, इन सब चीज़ों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है. सो किसी भी चीज़ से जिससे हमें पहले मोटिवेशन मिलता था, वो अगर प्रेजेंट टाइम में है, हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन हमें ऑन इंडिविजुअल लेवल वो वाइब्स नहीं आती to get motivated enough, or we are not feeling that I'm motivated enough to perform that thing, then this is a warning sign we need to pay attention to. Unpleasant emotions, showing aggression, fear, worry, isolation for no apparent reason. आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर नाराज हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, जो आप पहले नहीं हुआ करते थे, जो पहले आपका पर्सनालिटी का साइन नहीं था, तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. Then, as I said yesterday, that we need to take care of ourselves first before we start taking care of
somebody else. There was a question in the chat box yesterday. I just saw that someone asked me that what is self-care. So self-care is basically pampering ourselves, taking care of our physical needs, our psychological needs, our emotional needs, and anything that we are in dire need of. Something that we had in the previous time, we are lacking in the present time. So we need to pay attention. We need to see that what need to be done. सपोज कीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहा है, अंडरवेट हो रहा है, स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो हम किसी भी फिजिकल रूटीन से, किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज से, योगा से उन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. तो कोई भी सोर्स या कोई भी स्ट्रैटेजी जो हम अप्लाई कर रहे हैं in order to bring change in ourselves, in order to bring a positive outcome in ourselves, is basically self-care. So as I said that self-care is very important because it allows us to be in touch with us again. ये हमें अलाउ करती है कि हम ध्यान दें कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और हमारे अंदर अगर कोई वार्निंग साइन हमें दिख रहा है तो हमें उस पर कितना काम करना है ताकि उसका इम्पैक्ट ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ मुझ पर हो, इनफैक्ट द पर्सन हु आर नियर टू अस, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, उन पर भी किसी तरीके का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है. तो सेल्फ केयर के टाइम पे हम ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं. सेल्फ केयर इज बेसिकली रीबूस्टिंग आवरसेल्फ, खुद को वापस से बाउंस बैक करना चीज़ों से. जिन जिन एरियाज को नीड और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ किसी ना किसी चीज़ के एप्लीकेशन से, किसी स्ट्रैटेजी के एप्लीकेशन से, किसी मेथड के एप्लीकेशन से चीज़ों को वापस से नॉर्मल करना. So first we talked about physical care, that if you are feeling that you are not having enough energy or vibes to perform things, then take a break. Take a break from things that you are immediately doing and take a break for days if you feel like that yes, days are required to go back to normalcy. नॉर्मैलिटी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपके अंदर कोई मेंटल इलनेस है. नॉर्मैलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी डिस्ट्रेस से रिकवर होने के लिए आपको टाइम चाहिए. जैसे कि कफ या फीवर होता है तो हम छुट्टियाँ लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, लीव लेते हैं. ठीक उसी तरीके से 2 या 3 दिन का ब्रेक अगर हमें लगता है कि हमारा डिस्ट्रेस जो है वो थोड़े टाइम का है, हम उसके अगर विद इन 2 या 3 या 1 वीक ध्यान देंगे एंड इट विल गो बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी. तो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. सो वी नीड टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ केयर रूटीन. हमें वेल बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़रूरत होती है. कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है. ट्राई टू ईट हेल्दी, अवॉइड द फूड दैट कॉज अननेसेसरी weight gain, and try to avoid fast foods and all. Go for the things, salads or the natural things. Then you need to do exercise on regular basis. This thing we all know, but then again we try to maintain a distance कि नहीं ठीक है, नहीं करते हैं. We sometimes procrastinate. So if it is the requirement, if it is the urgent requirement, so we need to do exercise on regular basis. Then we can go for yoga, we can go for running, and we can prefer outdoor activities like playing badminton or doing some kind of playing some kind of outdoor sports with your family members or your friends. And regular sleep. As I said, do not become a night owl unnecessarily. Take enough amount of sleep. Take at least sleep for 7 to 8 hours. Your body needs restoration. The more the proper the restoration, the more effectively you can perform your forthcoming task. Take a warm bath once in a week. Yes, it is very important. Sometimes taking a warm bath actually stabilizes ourselves. We feel very relaxed. We feel very calm. We feel very composed. It kind of subtle. It brings our anxieties, our worries to a very subtle, to a very calm level. You can also go for green teas and all, and attend to the health issues when they arise. If you feel that something else is also happening to you physically, so monitor those physical things, and then you can go to a doctor also, so that you can maintain your physical routine by taking all these things in consideration. Food, sleep, exercises, right? So these are the prominent physical care that you can take care. And the next
we are shifting to psychological care, the most important one. एक बार बॉडी हमारी पेस पर आ जाती है, फिजिकली जब हम खुद को फिट फील करने लग जाते हैं, फिजिकली जब हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यस आई एम साउंड, आई एम फिट, आई कैन परफॉर्म माई टास्क, सो वी शुड नाउ पे अटेंशन टू आवर साइकोलॉजिकल केयर. सो the important thing you can do here is that you can maintain a journal. So journal is very important. Journal keeps track of the thing that either you have achieved or you are grateful of. Like I said yesterday also, that maintaining a journal actually is motivating ourselves. When we progress, when we monitor our progress step by step, so this progress help us that yes, we are going on a right path. Suppose if I started learning cooking, so I have mentioned that today I learned how to make tea. So this accomplishment, this sense of accomplishment itself is a motivating factor for me to prepare coffee tomorrow. In the same way, if I say today I learned one chapter, now next day, the following day, I'll study chapter 2. So every time when you monitor even your little accomplishment, it paves path to success. In the same way, you can make your long-term goals also in short-term goals. You can divide them. You can write that when and how you're going to complete them. So these monitoring of your success, this monitoring of your journey is itself a very, it itself is very motivating factor for you. As I said, you can also maintain the journal that how grateful you are. So in the present time, इस भागती दौड़ती लाइफ में हम हमेशा परेशान रहते हैं, या फिर हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ये नहीं है, ये हो गया, बट हम इन सब चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी भी हो रही हैं, एंड वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड. We are not expressing our gratitude to them. We are not expressing that how thankful we are. We are not thankful to our parents who are taking care of us. We are not thankful for our friend who is just one call away. We are not thankful for the teacher who is doing everything who is trying their best, to teach us. We are not thankful for the younger members of our family who are there around you all the time to keep your, to keep you happy all the time. So there are millions of people out there in the world who are going through a lot of things, but then each one of has something that we are grateful of. So always express your gratitude to those people who are out there, those who are helping you directly, indirectly, morally, verbally. So we really need to express our gratitude to them. Then we need to treat ourselves with kindness and respect. Very much important. Why? If we are not seeing ourselves in that way, so we will always feel that we cannot do anything in life. If we are going through something, then pamper yourself. Do not see yourself as an inferior person. Do not feel that मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो ऐसी ही हूँ, सब मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तो सब लोग मुझे आगे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ये लाइफ का इवेंट हो गया, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है. सो इन सब चीज़ों से एक्चुअली में वी आर लूजिंग आवर रिस्पेक्ट इन आवर ओन आईज. So if we cannot respect, if we cannot provide ourselves the sufficient amount of kindness or the sufficient amount of respect, how can we expect it from somebody else? So stand for yourself first before you do it for somebody else. Avoid self-criticism. See, if you have some negative aspect, so try to consider it and try to work upon it rather than putting it as a label on ourselves. अगर हम औरों की जैसे ही खुद को भी नेगेटिव ही लेने लगेंगे, तो हम सबसे पहले अपने लिए सेल्फ स्टिग्मा बना लेंगे कि आई हैव लेबल्ड माई सेल्फ as a failure, as an attention seeker, as a sympathy taker, or as a crybaby. So what we need to do, if there is something like this, we need to work upon it rather than seeing ourselves very inferior. Then practice asking and receiving help. This is the most important thing. आज के टाइम में ना तो हम help लेते हैं ना देते हैं. So this altruistic behavior has been vanished. और अगर वो help होती भी है तो it is more like one-sided. Either we give, we do not receive, or we are receiver but we feel very inferior कि no, I cannot ask for help. So end this gap. If you can help somebody, so somebody can also help you.
So we should not follow this trend in one dimension. Be a receiver and a giver also. So if there is a need, go for help. If you are in need, ask for help. Set realistic goals. As I said yesterday also, that if you really want to accomplish something in your life, if you have set your ambition, so what you need to do is, you need to set realistic goals. Prepare your goal, or write your goal in diary, or just place it on a big paper in front of your study table. See this every day. I want to become that particular designation, that particular aim that you have selected for yourself. You have to see it every day and you have to work upon it. Execute also. Do not keep everything here. Write it, prepare for it. If you want to go for civil services, then start doing work for it. If you want to become a doctor, start doing it. If you want to become a dancer, start doing it. And if you have a very short term goal, कि after 2 months I will learn this particular program, I will go learning this type of therapy, or I'll go to learn some kind of English foreign language. So even these are also your goals. So what I mean to say is, choose your goals according to your interest, according to your potential, and then execute them also. Divide your major life goal into short term goals, and then accomplish one goal, one small goal, then reach to second goal, sub goal, third sub goal, fourth sub goal. So once these start connecting, you will reach to your final goal. Track your progress. अब तक आपने कितनी चीज़ों को सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया, उन्हें भी ट्रैक करो, क्योंकि उनसे आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स पता चलेंगी, उनसे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, आपकी क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं. अब नेक्स्ट बार मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है, आगे मुझे इस चीज़ पर और काम करना है. सो एज आई ऑलवेज सेड, ट्रैकिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर एस्पेक्ट्स. एप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर द लिटिल प्रोग्रेस यू मेक. यस, हमें हमेशा लगता है कि जब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं करेंगे, हैप्पीनेस नहीं आएगी. सो एज आई ऑलवेज सेड दैट जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन. सो बिकमिंग अ डॉक्टर is your destination. The process, the journey in reaching, in becoming a doctor is also cherishable. You should cherish yourself for the little steps you have gone through, or the little progress you have made. So what we do, most of the people do these things. They avoid short achievements. उनको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो छोटे छोटे अचीवमेंट ही आपको मोटिवेट करते हैं आपके बड़े गोल तक जाने के लिए. Next, focus on enhancing your strength. As I already said that it is not always that we should work upon our shortcomings or our weakness. ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में मास्टर हों. ज़रूरी नहीं है हम हर जगह अपना 100% दें. ज़रूरी नहीं है हमारी सारी स्किल्स जो हों, हम जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सब हमारे अंदर. एक्टिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट. फोकस ऑन द लैंग्वेज, वहाँ से स्टार्ट कर देना. फोकस ऑन द लैंग्वेज. फोकस किस पे? फोकस ऑन, जो तू लास्ट में बोल कर दिया सेंटेंस स्टार्ट. फोकस ऑन. So we were talking about emotional care. So emotional care is very much important, because if we are not expressing the right emotion at the right time, we won't be able to take care of someone else's emotion also. So first of all, we need to understand, we need to monitor, we need to analyze, we need to regulate our own emotions first. Then, as I was talking, that first of all, it is very important to practice self-love. Practicing self-love is very important. Practicing self-love is very important, because if we are not treating ourselves, or if we are not pampering ourselves enough, we won't be able to give enough love and care to the another person. Then how to practice self-love? Just stand in the front of the mirror, see yourself in the mirror and say that I love myself, I am the best version of myself, and if I'm lacking at some place, I can improve myself, I can work upon myself. So we need to accept ourselves in our own eyes.
We need to see right through the eye, right into the eyes of ourselves, the reflection of ourselves that we see in the mirror. So start accepting yourself. Then cry. If you are suffering, if you're suffering from some distress, if something is bothering you, then cry and laugh or smile. Yeah, you don't need reason to smile, you don't need reason to laugh. As we see, there are a lot of people who laugh, very loudly in the morning, in the parks and in the communities. We don't need to go there. Your home, your place, your people. Just laugh as much as you can. Just smile. Anytime, anywhere if you want to. Then appreciate your qualities and accept your flaws. Try to work upon them. As I said, once you start seeing yourself in both aspects, that what the qualities I have and what the flaws I have, it means you have gained that acceptance that yes, I will enhance my strength and I will work upon my shortcomings. Talk to your family members and friends. Yes, talking to your family members and friends is very much important because we really need to open up to someone. You really need to express your emotions. You really need to express your sufferings, the things that are bothering you to at least one person in your family. Tell them what are you actually going through. What are the thoughts that haunt your mind, and how do you feel like all the time? How many thoughts are like, how many times you feel in a day that you are not worthy enough, or you are not having a purpose in life, or you feel aimless. So everything, each and everything that disturbs you, each and everything that makes you happy, each and everything that you need to be talked about, that it should be talked about, talk to that significant person. He or she can be anybody, your family, your friends, or anybody, any significant member of your life. Then foster your friendship. Yes, we really need to take care of we need to take care of our friend circle. Quality matters. So don't go for the quantity, go for the quality. If you have 3 to 4 people in your friend circle, then always make efforts to keep that bond alive. Do not leave responsibility just on the one person. It's your responsibility also. So try and fix plans to meet them. Then go for cuddles, means hug. So hug your mother, hug your father, hug any your family members, your friends. So hugging actually, relieves ourselves. It makes our neurotransmitters go active, and as you know, neurotransmitters promotes, a kind of emotional rise, a positive emotional rise in ourselves. So we feel good when we hug. So this is basically an emotional medicine that we are giving to ourselves and we are giving to the next person. Watch humorous and funny movies. Yes, we really need entertainment in our lives. Not every time we need to be, very serious. So just go for the movies, just listen some songs, enjoy. See funny things around. Find some funny things. See, monitor things around you. कुछ अच्छा लग रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ, उस पर मजाक कर लिया, हंस लिए. So ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, जिनका ध्यान हमें देना पड़ता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है. Not 24 hours we can talk about serious things, not 24 hours we can talk about achievement, success, goals, but we can talk about things जिससे हमें भी हंसी आए, सामने वाले को भी हंसी आए. तो ह्यूमर शुड बी देयर. We should have things to talk about जिसमें हम हंस सकें, and play with your pet. So if you are a furry animal, if you are a fur lover, so play with your pet. Or even if you don't like pets, then it's fine. So just enjoy the company of anybody जो आपको अच्छा लगता है. And अभी because of the pandemic or even the post lockdown, going out is not very much allowed. So what you can do, you can go for the virtual communications. You can go for the video calls, connect your friends, connect your relatives, connect your family members, talk to them, and express your things, share what you have done, share what you are learning. It's all about maintaining that communication bond. It means we should not leave things. We should stay connected. We should stay connected at least in 3 to 4 or 5 or 6 days. Try to connect to them. I'm not saying do it on regular basis, but you can do it at least after a few days. So these are the few things that you can take emotionally care of.
Moving next is for the professional persons, that how to take care of yourself professionally. So because in today's time we know competition is there, neck to neck competition is there, head over heels situation is there, and if we see deadlines, targets, incentives, these are the most common words we see when we are when we are working. So again, as I said yesterday also, that every second employee in India is going through some kind of mental distress, and majority of them are prone towards depression and anxiety. So again, it is a serious concern. So what possibly could be done? We need to take care of a few things, like take time for lunch. So try to give yourself a rest. Food is also required, so stop your work for a while and go for lunch or anything that you like. Then set boundaries. Bring a fine line between things. Okay, at this moment मुझे यही करना है, इस मोमेंट मुझे यही वाला काम करना है. अभी अगर मुझे अब मेरे बॉस ने एक काम दिया है, आई हैव टू पे अटेंशन टू, तो आप दूसरी चीज नहीं करोगे. सो ट्राई टू ब्रिंग गैप्स. देयर शुड बी अ फाइन लाइन between the things. The boundaries should be made, because if we do not have boundaries in our different arenas, we will mix them all, and then again too much, then it is very hard to control, or it's very hard to manage. Learn to say no. If you are being forced into something जो आप नहीं करते हो, अगर आपके colleagues suppose कीजिए, it is it's a culture, okay, please come and smoke with us, okay, go for drinking with us. So if you feel like you don't want to, then please don't do that. And apart from these habits also, if you feel like कि कोई भी ऐसा काम जो मुझे दिया जा रहा है which is not appropriate, as an employee I should not do that, then don't do that. So always learn to say no. Not for the work that have been assigned to you, but for the things that you feel like not good for you professionally or as a person. So try to say no in those situations. Leave work at workplace. Rest everything there. Put your anxiety, your worries, fear of deadline at workplace, and come home free mind. Because you have a family, you have people waiting for you, you have tasks to do more. So do not mix your personal and professional life unless it is not very much required. Then ask and provide support to colleagues. As I said, ask for help if you are in need, and give help if you feel your help is required somewhere. Get regular supervision. Yes, how are you performing professionally, though it is being monitored at workplaces by the by your कर दिया मैंने तो स्टार्ट पे काम. कनेक्शन आ गया ना, काम कनेक्शन आ गया. So the next care we are talking about is spiritual care. So basically spiritual care is all about connecting ourselves to our true self, appreciating and analyzing the things we possess in terms of strength and weaknesses, and enjoying the very element of the nature that are around us. So how can we take care of ourselves spiritually? Self-reflection is looking within. It means knowing ourselves, that what possibly are the best things we have and how we can nurture it, and if we are possessing certain kind of weakness, then how much we need to work upon them. We need not to rush behind things. We give them things the time they require, going very easily with ourselves, because rushing into things won't bring any kind of positive outcome. It will only going to bring a kind of mental imbalance. We won't be at peace mentally. Go into nature. It means enjoying the sunshine, the sunset, the rain, and appreciate the elements of nature. Walking barefoot on grass, appreciating the sounds, appreciating the early morning sounds, appreciating the things that nature is giving to us, and we should also be thankful. Remember the gratitude I was talking about? Gratitude is not only about the things that we receive from people. Gratitude is also about the things we receive from nature. Nature is giving us a lot of things that we are using or we are taking advantage of on regular basis. So what is important right now? We should pause, we should enjoy, we should go very easily, we should go on ease with ourselves and be thankful to the nature for giving us everything. Meditate.
Sometimes people say that we try a lot, but we are not able to meditate. We sit, we maintain the posture, we try to calm ourselves, but every time we have this thought in our mind, so we won't be able to meditate. So for this, I would like to say that there are various kinds of apps and videos out there on YouTube that you can see and you can learn how to meditate. And if it is not possible for you, and if you feel like that connecting ourselves via some virtual source is not you want, then try to be a part of some group or some spiritual community that where you can learn all these things. So meditate if possible, meditate if you want to, meditate if you learn it. Be inspired. We don't need inspiration from the big idols or the big personalities. Our sources of inspiration can be anybody. It might be present in our family, it might be present somewhere outside, it might be present somewhere in our circle, some book, some line in a book, some story, some picture. So try to be inspired from little things or from normal people as well, and try to gather the good qualities and try to identify and appreciate the qualities they have. Try to learn something from their success stories, and then start working upon yourself. What I'm saying is, we don't need to follow someone fully for gaining inspiration. If we can't make a single person our idol, there is no need. You just need some inspiration, and a source of inspiration can be anybody. It is not necessary that sources of inspiration are those personalities that we find on social media or in the Bollywood or in the politics. It can be any simple person, it can be any layman who is out there. You never know whose story will going to ignite the flame in you. Oh, I should do that thing in my life also. Practice kindness, forgiveness, and gratitude. Again, be kind to yourself, be kind to the people around you, be kind to the people who are in need. Express your gratitude to the people, say thank you whenever it is required. Required means if somebody is doing even a minor effort to you, say thank you. That thanks will always give the hope to the person that yes, if you help someone, it will revert back to them in good ways. Forgiveness. Some events happen in our life due to some person or due to some reason, so it's very hard for us to forgive, but we should learn how to be forgiving, because if we are not forgiving someone, there is a lot of stress and there is a lot of burden in our head. So in order to keep our baggage, our bag of tension, distress light, we need to vent out things. So we start forgiving people, and even if you are not ready to forgive them immediately, so at least try to reduce the impact, try to reduce the intensity of their impact on you. At least the least we can do that. Join spiritual community. As I said, if you like being a part of community, if you like to perform spiritual activities in a group, so you can be a part of spiritual community as well. So all the things that I have talked till now, these are the self-care that you can do on individual level. But as I said earlier also, that sometimes the distress is for shorter period of time. कुछ चीज़ें हमारी लाइफ की ऐसी होती हैं कि कोई अगर लाइफ में कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं या कोई लाइफ में फेलियर होता है, तो कुछ वक्त के लिए हम रुक जाते हैं. तो कभी कभी हम अगर सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करें, सब एस्पेक्ट पे अगर हम हमारा ध्यान रखें, तो वी कैन बाउंस बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद भी आपके इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो it is the high time, it is the biggest warning sign that we should go for professional help. जब घर के बेसिक इलाज से हमारी तबीयत सही नहीं होती, तो इन दी एंड हम उसी के पास जाते हैं जितने इतने साल पढ़ाई करके एक डिग्री अटेन की है. वी गो एंड मीट अ डॉक्टर, right? In the same way, if we feel that we are not able to manage, if we are not able to resolve our issue, we should go to a mental health professional. Counselors, psychologists and psychiatrists are there to help you. So what possibly a mental health professional can do? They come up with plans. They come up with plans for solving our problems. सबसे पहली चीज तो ये, they talk to you on a non-judgmental ground. They won't judge you. They won't make you feel ashamed. They won't criticize you.
They will listen to your problems. They will try to make a bond with you. They will gain your trust so that you feel very comfortable, so that you feel at ease that yes, I can share my problems to them. Then they help us in changing the behavior that hold us back. It means वो कोशिश करते हैं हमारे साथ efforts लगाने की कि हम हमारी चीज़ों को रिजॉल्व करें और वापस से अपने रूटीन पर, वापस से अपनी पेस पर आ जाएं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देते। They are not the immediate giver of the solution of your problems. They work with you. They push you to make efforts. They push you to select alternatives. They push you to see the weakness and strength in you. They help you in knowing yourself. So basically, they lead you to the solution of your problems. They don't put solution served on a plate. So this is the role of a mental health professional. They help you in knowing you. They help you in accepting yourself. They help you in recognizing your sources of distress. They help you in working on your problems. They help you gaining mastery over your weakness. Then they heal pain from our past. कई बार हमारे मेंटल डिस्ट्रेस का रीजन हमारे पास्ट में होता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी मेंटल इलनेस जो होती है उनकी रूट कॉज हमारे चाइल्डहुड में होती है। तो दे हेल्प अस इन गोइंग बैक टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। दे ब्रिंग बैक आवर पास्ट एक्सपीरियंस इनटू कॉन्शियसनेस सो दैट वो जान सके कि ऐसे कौन से सोर्सेज थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। They help us in figuring out our goals. As I said, they won't give goals to you so that you can follow them. They help you in figuring out your goals. So basically, आप ही अपने लिए solutions ढूंढेंगे, आप ही अपने लिए goals decide करेंगे। वो सिर्फ आपको उस जर्नी तक लेकर जाएंगे जहां आप इतने वापस से capable हो जाते हो कि आपके ऊपर confidence आ जाता है। आप अपने आप को इतना स्टेबल समझने लग जाते हो that now you can deal with the emotional or psychological distress of your life effectively. Then they help you in building up your self confidence. So आपका self confidence जब वापस आ जाएगा, आपकी self esteem जब high हो जाएगी, तो आप अपने आप ही अपने potentials को grow करोगे और अपने आप ही अपनी weakness को जानकर उन पर काम करके उनको resolve करोगे। So as I always said कि हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि let's talk about mental health or let's talk I'm hearing. So yes, if someone is suffering from some kind of emotional distress, आप उनकी बात सुनिए। आप उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उन्हें कंफर्ट कीजिए। लेकिन टॉकिंग जो है वो सिर्फ एक सर्टेन एस्पेक्ट तक ही काम करेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करने से खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। तो बेसिकली जब आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन को टॉकिंग से ज़्यादा एक प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सामने वाले पर्सन को समझाएं कि नाउ दिस इज द हाई टाइम वी शुड गो फॉर सम प्रोफेशनल हेल्प। प्लीज़ हमें भी हमारे दिमाग से इन मिथ को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो लोग हमें पागल समझेंगे, और ये सब चीज़ें लोग नहीं कहते, हम ही रेडी नहीं होते हैं खुद को इस लेवल पर तैयार करने के लिए कि हम जाके किसी काउंसलर से बात करें या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें। बात करने से हमें थोड़ी देर के लिए सिर्फ कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन टॉकिंग से चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो जब चीज़ें एक लेवल के बियॉन्ड चली जाती हैं तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम लेट्स टॉक से बियॉन्ड हो जाती है और उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना ही होता है। नाउ what possibly other things can be done in creating awareness and promoting mental health at community level? See, we have talked about things we can do at individual level, things we can do for each other, but mental health is a global problem, as I said, and because of this lockdown and because of this pandemic, mental health has become, a serious concern. So as I said earlier that the condition is very devastating in our country. So this is a high time, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब हमें कि हम कुछ ऐसे कैंपेन्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ, NGOs के साथ मिलकर बनाएं जिससे हम एक कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। बिकॉज
प्रिवेंशन इज प्रिवेंशन, हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन तभी आएगा, हम चीजों से बचाव तभी करेंगे जब हमारे अंदर अवेयरनेस होगी। और अभी तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में हम अवेयर ही नहीं है, हमारे अंदर जागरूकता ही नहीं है। तो वो जागरूकता हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारे अंदर अवेयरनेस होगी, और उस अवेयरनेस के लिए हम सबको मिलकर बहुत सारा काम करना होगा। सो एज आई सेड, द मोर द अवेयरनेस, द मोर अर्ली द रिकॉग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, सो द अर्ली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी फॉलोड। जितना जल्दी अवेयरनेस होगी उतना जल्दी लोगों के अंदर समझ आएगी, तो वो उन चीज़ों को समझेंगे। जब वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर सच में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उतना ही इमीडिएटली हम लोग ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मीडिया का क्या रोल है इस कम्युनिटी के अंदर? मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, न्यूज़ के थ्रू मिलती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलती है, उसमें क्रेडिबिलिटी अगर हम देखें आज के टाइम में, तो कैसे फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो या तो ऐड कर दिए जाते हैं या फिर अननेसेसरी उनको कुक कर दिया जाता है। सो देयर इज समहाउ अ क्वेश्चन ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम मीडिया। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस हो, वो साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस या जर्नल्स या स्टडी मटेरियल से आनी चाहिए, जो वहाँ से एविडेंस निकल के आनी चाहिए। वहाँ जो स्टडीज हुई हैं उनके बेस पे जो कंक्लूजन्स होते हैं उन्हें इन चैनल्स के थ्रू लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको इन सोर्सेज से मिलेगी आप उन पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही नहीं, रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ताकि रूरल पॉपुलेशन से लेके हमारी कंट्री के हर कॉर्नर तक वो पहुंचे। जितना ज़्यादा हम ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पर लोगों से कनेक्ट होंगे, उतना ही वो लोग हमारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो सिर्फ एक अर्बन या मेट्रोपोलिटन ट्रेडमार्क नहीं है। It can happen to any of us, or it is possible that it might be happening to any one of us. Then sharing success stories of people who recovered. हमने देखा है कि टीवी पे या मीडिया पे किस तरीके से कैंसर की सक्सेस स्टोरीज आती हैं या किसी भी फिजिकल इलनेस की सक्सेस स्टोरीज आती हैं, तो वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ, वी शुड बी वेरी मच आउटस्पोकन। हमने देखा है कि कितने लोग अपने मेंटल इश्यूज के बारे में खुल के बात करते हैं, तो वी शुड कम ऑन द फ्रंट, वी शुड टॉक अबाउट द सक्सेस स्टोरीज एंड वी शुड शेयर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अदर पीपल, हाउ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव सफर्ड, व्हाट आर द थिंग्स they have gone through, और उसके बाद उन्होंने किन किन एस्पेक्ट पे काम किया और कैसे आज वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहिए, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज होनी चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की बहुत कमी है, तो कंसीडरिंग द डेटा, कंसीडरिंग द नेसेसिटी, वी शुड रिक्रूट द क्वालिफाइड well expertise professionals, mental health professionals. Then government should invest more on budgets for mental health. As I said कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम करती है, तो सबसे पहले तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो भी हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज यानी कि मेट्रोपोलिटन जैसे सिटीज़ तक नहीं होना चाहिए, वो गाँव तक भी जाना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ला सके। दूसरा, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैंपेन्स करने चाहिए एनजीओज के साथ मिलकर, सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें कम्युनिटी में, हमें स्कूल कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, स्कूल कम्युनिटीज़ हो गई, कॉलेज कम्युनिटी हो गई, इवन हमारे ऑफिशियल सेक्टर्स हो गए, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, मतलब जितने भी सोर्स जहाँ पर हम एक गैदरिंग करके या जहाँ पर हम लोगों को ऑन अ लार्ज लेवल कनेक्ट करके लोगों को बता सकें, तो हम वो अवेयरनेस और कैंपेन प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर गैदरिंग इज नॉट पॉसिबल कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, देन अगेन वर्चुअल मीडिया इज ऑलवेज देयर, वी कैन कनेक्ट टू द मिलियंस ऑफ पीपल एज वी आर कनेक्टिंग राइट नाउ विद ईच अदर। किस तरीके से अभी हम इस सोर्स से कनेक्टेड हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इतने सारे लोगों से, ठीक उसी तरीके से ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम डिजिटली भी चला सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इससे कनेक्ट हो सकें। देन एजुकेशनल सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज
एक बच्चे की जो लर्निंग होती है, लर्निंग फेज में जो बच्चा चीज़ें सीखता है वो लास्ट तक उसके साथ रहती हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे हमारे करिकुलम का पार्ट बनाया जाए, उसे हमारे करिकुलम के अंदर, हमारे बुक्स के अंदर इंक्लूड करा जाए। बच्चों को ऐसी सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले। बच्चों को बुक्स के अंदर ऐसे टॉपिक्स और ऐसे चैप्टर्स बताए जाएं जहां पर स्टिग्मास के ऊपर बात की गई हो, जहां पर ये बताया गया हो कि स्टिग्मास क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म करना है। बच्चों को म्यूचुअल लेवल ऑफ अफेक्शन, म्यूचुअल लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल लेवल ऑफ ट्रस्ट की जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल से सिखाई जाए। काउंसलर्स को स्कूल्स में रिक्रूट करना चाहिए सो दैट काउंसलर्स टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर कर सके। अकेडमिकली ही नहीं, बच्चा स्कूल के अंदर अगर साइकोलॉजिकली किसी इश्यूज से डील कर रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी बनती है और काउंसलर्स की भी बनती है कि वो साथ में काम करें। पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाए अगर बच्चे की किसी प्रॉब्लम के अंदर, किसी प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के अंदर पेरेंट्स की ज़रूरत है। और स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारे डिजिटल सोर्सेज के थ्रू, प्लेस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजियर लेवल पर समझाया जाए ताकि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए कि जिस तरीके से फिजिकल इलनेस है, मेंटल इलनेस भी बिल्कुल वैसी ही है। तो बच्चों को उन दोनों चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करना हो, ना करें, दोनों चीज़ों को इक्वली देखें। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हैप्पीनेस, सैडनेस के भी बहुत क्या इम्पैक्ट होता है। हम जब फिजिकली हेल्दी हैं तो हम मेंटली हेल्दी भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए। So with all these things, I think I have discussed all the parameters that one can include to promote mental health, because I always said and I strongly believe कि mental health जो है, it is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you are going. This is a very famous quote and I strongly believe in this. Just like we take care of ourselves physically during the entire course of life, मेंटल हेल्थ का ध्यान भी हमें, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी वेलबींग का ध्यान भी पूरी लाइफ रखना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलेगा। इस प्रोसेस के अंदर हमें वो सारे एफर्ट्स करने हैं जो हमें करने चाहिए। कहाँ हमें ज़रूरत है कि हमारी चीज़ों पे, हमारी स्ट्रेंथ पर, हमारी वीकनेस पे काम करें, कहाँ कोई लाइफ का नेगेटिव इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमें लंबे समय तक बॉदर कर रही है, कहाँ हमें किसी से वो चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है, कब हमें ज़रूरत है किसी से उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो हमें कब ज़रूरत है कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, और हम नॉट एट एन इंडिविजुअल लेवल भी क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस कर सकते हैं, किस तरीके से एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। सो रिमेंबर दैट वी ऑल आर टुगेदर इन दिस जर्नी ऑफ कीपिंग एंड मेंटेनिंग आवर मेंटल हेल्थ। So with this, we are terminating with our day 2, and I hope मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को आपके क्लियर किया होगा कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ की सिचुएशन वर्स्ट है और किस तरीके से हमें इन पे काम करना है। ना सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि कैसे हमें मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लेना है। सो वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑफ आवर मेंटल हेल्थ एंड पीपल हु आर अराउंड अस। And with this, I am terminating my session. I hope it has given you some fruitful information, and I hope that in spite of all the technical errors, we tried our best to provide you all the necessary information. And today we are ending with the day 2, and we'll meet our next class with some new topic of psychology. So keep the curiosity, keep this eagerness alive, and thank you so much. Thank you so much, and so we'll meet again in the next session.